In today's lecture, we will explore the biological species concept, one of the most important and widely accepted ideas in modern biology. Outlines: we will begin with biological species concept. We will explore its applications, which it helps us understand real biological systems, and also its limitations, where it may not fully explain species. By the end of this lecture, you will be able to clearly define and understand the biological species concept. You will learn how to explain key processes like gene flow and reproductive isolation and differentiate this concept from earlier species concepts. We will also apply these ideas to real biological examples and evaluate their strengths and limitations. Finally, we will be able to formulate a clear understanding of its role in modern taxonomy and evolutionary biology. The most important concept in modern taxonomy is the biological species concept. This idea emerged after Darwin's theory of evolution and was clearly formulated by Dobzhansky and Ernst Mayr. According to this concept, species are not just groups that look similar. They are populations that can actually or potentially interbreed. But here is the key point: they must be reproductively isolated from other groups, which means even if two organisms look similar or alike, if they cannot produce fertile offspring, they belong to different species. So always remember, in this concept, reproduction defines species, not just appearances. According to Ernst Mayr, a species is a reproductive community of populations that are isolated from others and occupy a specific ecological niche. In simple words, species are groups of organisms that interbreed and share common descendants. This idea is also known as Mayrian concept, emphasizing reproduction and natural grouping. So here's the key takeaway. Species are not just defined by appearance, but their ability to reproduce and maintain genetic continuity. And according to this concept, species perform three important biological functions, which we will discuss in the next slide. According to the biological species concept, species perform three important functions. First one is species act as a reproductive community. Members recognize each other and interbreed to produce offspring. तो पहली बात हो गई कि ये रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होगी, एक स्पीशी एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी होगी. इसके मेंबर्स, इस स्पीशीज के मेंबर जहां पर भी होंगे, एक दूसरे से दूर हैं, करीब हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज में रह रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को तलाश करेंगे, एक दूसरे को भीड़ में पहचानेंगे कि हम एक स्पीशीज हैं, फिर दे विल मेट और फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे. द सेकंड वन इज species function as an ecological unit. They interact with other species and share same environment as a single unit. अब एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में कई सारे डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं, लेकिन आप उसमें से एक स्पीशी कंसिडर करें तो वो एक स्पीशी एक इकोलॉजिकल यूनिट है, उनका अपने एक यूनिट बरकरार रहेगा, लेकिन ये यही इकोलॉजी जहां ये रह रही है वो बाकी स्पीशीज के साथ भी वो उनको शेयर करेंगे, लेकिन इनकी अपनी इकोलॉजिकल यूनिटी बरकरार रहेगी. The third one is species are a genetic unit. They maintain a common gene pool through continuous gene flow. अब देखें जेनेटिक यूनिट है. जेनेटिक यूनिट कैसे है? मैं आपको जीन पूल की बात करता हूं. अब पूरे दुनिया में इस वक्त जितने भी इंसान हैं, जितने भी होमोसेपियन हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो नेग्रू है, चाहे वो कोकेशियंस हैं, चाहे वो एशियन है, जिस नस्ल से भी है, दुनिया के जिस कोने में भी है, 8 बिलियन है या 8 मिलियन है या जितने भी है, इन सब के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है और 46 क्रोमोसोम के अंदर जीन्स है. और इन सारे जीन्स को आप ये समझे कि ये सारे जीन जो है एक तालाब की शक्ल में है, जिसमें से कुछ जीन्स मेरे अंदर है, कुछ जीन्स आपके अंदर है, कुछ जीन्स किसी और के अंदर है, लेकिन ये सारे जीन सारे इंसानों के जीन्स को मिला के जीन पूल बन गया. तो अब ये इंसानों के इस जीन पूल में ये जीन फ्लो होगा, ये अपनी इस जेनेटिक यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे. मिसाल के तौर पर अमेरिका से अगर किसी की शादी हो जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया में, इंडिया से बांग्लादेश में, बांग्लादेश से रशिया में और अफ्रीका में,
तो ये जो जीन है ये एक्सचेंज करेंगे इस तरह, और इनकी जो जेनेटिक यूनिटी बरकरार रहेगी, ये अपने जेनेटिक यूनिटी को बरकरार रखेंगे। और एक इंडिविजुअल, इन सारे इंसानों में एक सिंगल इंडिविजुअल का आप तस्वुर करें तो वो जस्ट एक टेम्परेरी वेसल है, जिसने अपने अंदर थोड़ा सा पोर्शन, दुनिया के इतने सारे इंसानों के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन जीन में से थोड़ा सा पोर्शन उसके अंदर उसकी बॉडी में है, और ये जीन पूल वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में मेटिंग के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद उसको ट्रांसफर करेगा टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो रिमेंबर, species are not just group of organisms, they are reproductive, ecological and genetic systems working together. That's what makes the biological species concept so powerful in understanding life. Why the biological species concept is so important in modern biology? First, it clearly shows that the term species is not absolute but relative. A species is defined in relation to other species, mainly based on reproductive isolation. For example, if population A cannot interbreed with B and C, then A is considered as a separate species. तो आप इसमें देख लिया, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव है, स्पीशी रिलेटिव है। लाइक स्पीशी ए है, बी है और सी है, तो स्पीशी ए बी के साथ और बी सी के साथ या ए सी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरब्रीड, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो हम कहेंगे कि ये अलग स्पीशी है, और दैट्स रिलेटिव टर्म मीन ए इज अ स्पीशी इन रिलेशन टू बी और सी, बी इज अ सेपरेट स्पीशीज इन रिलेशन टू ए एंड सी, सो दैट्स व्हाई स्पीशी इज अ रिलेटिव टर्म, और रिलेटिव है। तो बी बी के साथ इंटरब्रीड करेगा, ए के साथ और सी सी के साथ, एंड दे के नॉट इंटरब्रीड, so that's what reproductive isolation is. Secondly, this concept completely rejects the old typological concept, which assumed species were fixed and unchanging. Instead, biological species concept tell us something very powerful. Species are dynamic and evolve over time. They are not fixed entities. They change with space and time through evolution. This concept clearly states that species are not fixed entities. They are changeable with space and time, which support the idea of evolution. It also helped solve the long standing conflict about changing in species, providing that species can evolve rather than remain constant. In fact, it successfully bridges the gap between two opposing views like the fixity of species and fluidity of species. Fixity of species by naturalists and fluidity of species by evolutionists. So finally, this concept is extremely important because it is widely used in major biological fields like ecology, physiology, and ethology. So it provides a strong evolutionary and practical foundation for understanding life. Difficulties in applying the biological species concept. Although this concept is considered the most practical and widely accepted, it is not always easy to apply in every situation. For example, in some organisms like asexual species or fossils, we cannot observe interbreeding, so the concept becomes difficult to use. However, this does not mean the concept is invalid. In fact, the majority of living sexually reproducing organisms, it works very effectively. Therefore, even if there are few limitations, we should consider the overall validity of the biological species concept rather than rejecting it completely. So the key idea is the concept may have limitations, but it remains highly useful and reliable in most biological cases. Major difficulties. First one is insufficient information. In many cases, especially in wild populations, we simply do not have enough data about mating behavior or reproduction. This makes it difficult to determine whether organisms belong to the same species. The second one is uniparental or asexual reproduction. Organisms like bacteria reproduce without mating, so the concept of interbreeding cannot be applied to them. Third one is evolutionary intermediacy. During evolution, intermediate forms exist that blur clear species boundaries, making classification challenging. So while the biological species concept is powerful, these limitations remind us that it cannot be applied universally in all biological situations.
इंटरमीडिएट फॉर्म्स और इवोल्यूशनरी इंटरमीडिएसी का मतलब यह है कि जब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी बनती है तो हमने ऑलरेडी स्पीशीज कई सारे टाइप्स पढ़े हुए हैं, और उसमें दरमियान में ऐसे स्टेजेस आते हैं कि उन स्पीशीज को आप फुल स्पीशीज भी तस्वुर नहीं कर सकते, और वो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो वो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होते हैं उनको फिर अ, उसके ऊपर बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। The first major difficulty is insufficient information. In many species, individuals show a lot of variation, which can create confusion. Sometimes we may think a different looking organism is a separate species, when in reality it is just a variation within the same species. These variations can be due to sexual dimorphism, where male and female look different. It may be because of age differences between young and adults, or polymorphism, where different form or multiple form exist within the same species. For example, in the Asian coil, the male is completely black, while female is brown with white spots. Without proper knowledge, one might wrongly identify them as different species. So the key point is lack of sufficient information can lead to misclassification of the species. Another major difficulty arises when we deal with non-living specimens. Neonatologists working with preserved museum specimens and paleontologists studying fossils often face this problem. They identify species based on morphological features such as shape and structure, but they cannot confirm them biologically. This is because these samples are non-living, so it is impossible to test whether they can interbreed with other populations or not. So as a result, classification based only on morphology may sometimes be misleading. Fossils and preserved specimens allow only morphological identification, not biological species identification. So neonatologist जो कि म्यूजियम स्पेसिमन प्रिजर्व स्पेसिमन स्टडी करते हैं, और जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं जो कि फॉसिल स्टडी करते हैं। नाउ इट इज क्लियर कि जो म्यूजियम के स्पेसिमन्स हैं वो तो डेड है, और इस तरह फॉसिल्स भी, तो वो तो इंटरप्रीटिंग नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन सम टाइम जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी है, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, asexual or apomactic groups. So apomactic or asexual groups or organisms that reproduce without mating or interbreeding. So unlike sexually reproducing species, they produce offspring directly from a single parent, resulting in genetically identical individuals, also known as clones. So, because there is no interbreeding, these organisms do not meet the key requirement of the biological species concept. Common examples include amoeba reproducing by binary fission, hydra by budding, planaria by regeneration, and aphids by parthenogenesis. So, therefore, alternative species concepts are used to classify such organisms. तो एपोमैक्टिक और एसेक्सुअल ग्रुप्स वही हैं जो कि इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं, बल्कि क्लोनल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बैक्टीरिया। तो इनकी बाइनरी फिशन होती है या बडिंग के थ्रू या रीजनरेशन के थ्रू या पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इंटरब्रीडिंग है नहीं, तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। Uniparental reproduction includes several important forms such as self-fertilizing hermaphroditism, automexis, parthenogenesis, vegetative reproduction, and gynogenesis. In these processes, a single parent is involved and fertilization may be absent or modified. These modes of reproduction are very common in lower invertebrates, especially in insects, and can even be observed in some lower vertebrates like reptiles. For example, parthenogenesis allows development from an unfertilized egg, while gynogenesis involves activation of egg without genetic contribution from the male. These strategies
help organisms survive and reproduce efficiently in stable environment. In some animals, there is a fascinating pattern called alternation of generation, where sexual and parthenogenetic generations occur regularly. This is commonly seen in organisms like aphids, gallwasps, daphnia, rotifers, and Digenean nematodes. In this cycle, one generation reproduces sexually, producing fertilized offspring, while the next generation reproduces asexually through parthenogenesis. Despite these differences, both generations belong to the same species. Therefore, neither form is given separate species status as they are only temporary phases within a single life cycle. तो चूंकि एक ही स्पीशीज के अंदर टू स्टेजेस आते हैं, दो जनरेशन है, एक है सेक्सुअल और एक है पार्थेनोजेनेटिक और है सेक्सुअल। तो चूंकि नोमेनक्लेचर रिकॉग्निशन टेम्पररी फॉर्म्स को नहीं दी जा सकती, so again here we cannot apply biological species concept. Let's first make three terminologies very clear. One is Thelotoki, one is Erenotoki, and the third one is Deototoki. These are all different kinds of parthenogenesis that can produce different types of offsprings. And Thelotoki, unfertilized eggs develop into females only. And Erenotoki, they develop into males only, as you can see in honeybees. And Deototoki, both males and females are produced from unfertilized eggs. These are important reproductive strategies found in many invertebrates and some vertebrates. And some animals species, males are either absent or non-functional, and reproduction occur only through females. The special type of parthenogenesis is called teleotoky. In such cases, offspring are produced from unfertilized eggs, resulting into all female population. Depending on the meiotic mechanism, some species promote homozygosity, producing genetically similar individuals, while others promote heterozygosity, leading to variation. Now, interestingly, homozygosity promoting forms may contribute to recent speciation events. For example, if two related species hybridize and the hybrid shift to parthenogenesis, it can no longer be classified using the biological species concept and instead is recognized using morphological or ecological species concept. So ऐसी कंडीशन जिसमें तिलटोकी है, जिसमें मेल या तो एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, तो वहां पर जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स होंगे वो सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन में डेवलप हो जाएंगे, क्लोनल कॉलोनीज होंगी और ये एफिड्स में पाया जाता है। नाउ जो इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें या तो जो मियोटिक डिवीजन है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो मियोटिक डिवीजन कैसे है। अगर वो होमोजाइगोसिटी प्रोमोटिंग है तो तमाम जो इंडिविजुअल बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगोसिटी प्रोमोटिंग है तो फिर जेनेटिकली वेरिएबिलिटी आ सकती है और दैट्स व्हाट रिजल्ट इनटू स्पॉन्टेनियस रेसेंट स्पेसिएशन। इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह लें कि अगर दो रिलेटेड स्पीशीज हैं और वो हाइब्रिडाइज करें, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप देखिए ये ब्लू कलर और ये थोड़ा सा हल्का पिंकिश कलर इसलिए दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज है। अगर दोनों हाइब्रिडाइज करें तो यहाँ पर थोड़े से ब्राइट कलर के नए जो दोनों के हाइब्रिड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये जो हाइब्रिड न्यू प्रोड्यूस हो गया, अगर ये पार्थेनोजेनेसिस में शिफ्ट करें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करें तो जाहिर बात है कि ये फिर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि ये तो हाइब्रिड है, हम इसको ना ये स्पीशी कह सकते हैं स्पीशी ए और ना स्पीशी बी, बल्कि ये तो एक हाइब्रिड बन गया। तो फिर हम उसको मॉर्फोलॉजिकल या इकोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 and 3। An important example of the Tirtoki is seen in female lizards, species of the genus Nibidophorus, found in the southwestern United States and Mexico. These species reproduce without male through parthenogenesis. Similarly, this phenomena is also observed in some salamanders, fishes, and even in certain grasshoppers. In case of Rana esculenta and Physolopsis, the male chromosomes are eliminated during meiosis,
leaving only maternal chromosome to form a haploid egg. The sperm from another species may trigger development but does not contribute genetically. Therefore, there is no true interbreeding and the biological species concept cannot be applied here. This type of reproduction is known as pseudogamy or gynogenesis, and such organisms are called kleptospecies. तो ये जो दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, एक निमिडोफोरस के जिसमें जो है मेल एब्सेंट है और ये लेजर्ड्स पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये तो जस्ट जो है वो पार्थेनोजेनेसिस, इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन और मैटिंग और वो चीज नहीं हो रही है। अब एग्जाम्पल 3 में भी चूंकि तिलटॉकी है, यहाँ पर भी ट्रू मेटिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इसमें तो मेल स्पर्म आता है तो ओके, मेल स्पर्म इसमें आ जाता है और मैक्रोस्कोपी लेवल पर जहां आपको दिख सकता है कि दे आर मेटिंग। लेकिन एक तो मैंने आपको कहा था कि रिप्रोडक्शन में दो चीजें होंगी, एक मैक्रो लेवल पर जहां पर दो ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल मिलेंगे, मेट करेंगे, लेकिन एक माइक्रो लेवल पर है जहां पर एग और स्पर्म ने मेट करना है, उन्होंने फ्यूज होके जाइगोट बनाना है। तो यहां पर वो माइक्रो लेवल पर फ्यूजन नहीं है। मेल क्रोमोसोम या सॉरी मेल जो स्पर्म है वो सिर्फ एक को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा इन रिप्रोडक्शन। तो इस तरह यहाँ पर भी ट्रू मेटिंग नहीं हुई और ट्रू कोई इंटरब्रीडिंग नहीं हुई क्योंकि जीन्स जो है वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह के जो स्पीशीज होते हैं जो कि सीरोगेमी और गाइनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस स्पीशीज को क्लेप्टो स्पीशीज कहा जाता है। Evolutionary intermediacy refers to populations that are in the process of becoming separate species. So, when we study a species, we often find some populations that have acquired certain characteristics of a new species, but not all. These intermediate forms create challenges for taxonomists because it becomes difficult to decide whether they should be classified as same species or as distinct species. Since evolution is a very gradual process, such transitional populations show mixed features, making species boundaries unclear and sometimes controversial. तो जैसे हमने ये कहा कि इवोल्यूशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और जब हम किसी भी स्पीशीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ऐसे फॉर्म्स भी मिलते हैं जो कि दरमियान में हो इवोल्यूशन के। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेन पॉपुलेशन है और इनकी ये इंटरमीडिएट स्टेज है जिनमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो न्यू ट्रेड के चेंजेस भी इनमें आए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट सेपरेट न्यू स्पीशीज नहीं बनी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, इसमें ये दरमियान में जो फॉर्म्स आते हैं जिनको हम क्लियरली नहीं कह सकते क्या है, ये ओल्ड पॉपुलेशन है या ये न्यू स्पीशी बन गई है। तो ये जो दरमियान में स्टेजेस होते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और बायोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। Now, acquisition of reproductive isolation without equivalent morphological differences. So, in evolutionary intermediacy, some populations may become reproductively isolated, even without obvious morphological differences. Such species are known as sibling species. So, although they look almost identical, they do not interbreed and are genetically distinct. This creates a major challenge for taxonomists because traditional classification based on morphology may fail to distinguish them. Therefore, reproductive isolation becomes a more reliable criteria than visible traits in identifying such species. तो देखिए जो सिबलिंग स्पीशीज होते हैं इस पे हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उनमें थोड़ी सी डाइवर्जेंस आ गई। अब ये जो डाइवर्जेंस आई है ये जो रिप्रोडक्टिव जीन्स हैं उसमें आई हुई है। इनके मॉर्फोलॉजिकल जीन्स अभी भी आइडेंटिकल है, तो इसलिए ये तो मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा या मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसे होंगे। आप इस पिक्चर में देखें दोनों एक जैसे दिखते हैं बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्टिव जीन्स है उसमें चेंज आया हुआ है। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि अगर हम मॉर्फोलॉजी पे इसको एक्सप्लेन करते हैं
तो हम तो ये कहेंगे कि ये दोनों एक जैसे स्पीशीज है। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे जाएं तो फिर वहां पे हमारी ये आसानी हो सकती है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो अलग स्पीशीज है। In evolutionary intermediacy, sometimes populations develop strong morphological differences, yet they are not reproductively isolated. This means that even though they look very different, they can still interbreed when they come into contact. Such populations are classified as subspecies rather than separate species. This shows that visible differences alone are not enough to define species boundaries. True species distinction require reproductive isolation, not just morphological variation. So, इस एग्जाम्पल में आप अगर देखें, जो पांथेरा टाइग्रेस टाइग्रेस है, वो पांथेरा टाइग्रेस एल्टीशिया के साथ मेट कर सकता है, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, वैसे तो ये बहुत दूर है, ये एलोपेट्रिक स्पीशीज है, एक दूसरे से अलग है जियोग्राफिकली, लेकिन अगर आप इनको कांटेक्ट में ले आए तो दे कैन इंटरब्रीड। अब देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, मॉर्फोलॉजिकली इनमें बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, इवन इकोलॉजिकल डिफरेंस है इनमें, लेकिन अगर इनको आप करीब ले आए तो वे इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके मॉर्फोलॉजिकल जीन्स तो चेंज हो गए हैं, बट इनके जो रिप्रोडक्टिव जीन्स है वो अभी भी एक जैसे हैं। तो सच स्पीशीज को हम सब स्पीशीज कहते हैं। नाउ द ओकेजनल ब्रेकडाउन ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म और hybridization. So sometime even well-defined species may experience a breakdown in their isolating mechanism. This leads to hybridization, where individuals from different species interbreed and produce hybrids. However, these hybrids are usually sterile or have very low viability, meaning they cannot survive well or reproduce. Because of this, they do not create significant taxonomic problems. Classic examples include mules and hinnies produced from crosses between horses and donkeys. So these cases show that although reproductive isolation is generally strong, it is not always absolute. तो यहाँ पे अगर हम हॉर्स प्लस डंकी को मेट कराते हैं तो उससे म्यूल बनेगा, और अगर डंकी प्लस हॉर्स को मेट कराएंगे तो इससे हेनीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये यूजुअली इनकी जो वाइबिलिटी है वो बहुत लो होती है, सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर सर्वाइव कर भी जाए तो ये यूजुअली स्टेराइल होते हैं और दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नाउ parthenogenetic species formed through hybridization. Hybridization between two different species can sometimes produce individuals that carry one chromosome set from each parent species. In certain cases, this leads to chromosome doubling, a condition known as allotetraploidy. In animals where cross-fertilization is normally required, such hybrid individuals may survive by switching to parthenogenesis. This allows them to reproduce without mating and maintain their lineage independently. As a result, new parthenogenetic species can arise through hybridization followed by chromosome doubling, representing an important mechanism of speciation. For example, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट ए और पेरेंट बी, जब वो मेट कर लेते हैं और दोनों के फुल सेट आ जाते हैं, n इज इक्वल टू 10 क्रोमोसोम एंड n इज इक्वल टू 10 क्रोमोसोम, और यहाँ पर दोनों डबल हो जाते हैं, तो जो नया बनेगा इंडिविजुअल वो एलोटेट्रोप्लाइड होगा। और अगर ये एलोटेट्रोप्लाइड आगे स्विच करे इनटू पार्थेनोजेनेसिस तो वो अपनी लाइन पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू उसको कंटिन्यू करेगा। और ये मैकेनिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इन स्पेसिएशन, और ये यहाँ पर भी बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेमी स्पीशीज एंड इलो स्पीशीज। In evolutionary intermediacy, some geographically isolated populations show an intermediate status between subspecies and true species. These are called semi-species. Now, depending on the criteria used, such as morphological, genetic, or reproductive, they may sometimes be considered separate species and sometimes not. On the other hand, in certain cases, these isolates have clearly reached the species level but still remain part of a larger group called superspecies. Such fully distinct yet closely related species are known as allospecies. This highlights how species boundaries can be complex and depends on the criteria applied. तो यहाँ पर आप अगर
एग्जाम्पल ले रिंग स्पीशीज ऑफ लॉरस गल्स, तो यहाँ पर जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है बट एक दूसरे के करीब करीब है, तो दे कैन इंटरब्रीड। लेकिन जो एंड्स पर है वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। सो ये एलो स्पीशी जो है और या सिमी स्पीशी जो है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। Thank you for watching. I hope this lecture made the biological species concept very clear and easy to understand. If you found this helpful, don't forget to like and subscribe and share these videos with your friends. Your support really helps the channel grow. If you have any question or need further clarification, feel free to ask in the comment section. I will see you in the next lecture. Keep learning and stay curious.